screenplay, singer, musician, producer, and television host. Today we have the privilege of having Farhan. Actually, the reason is that there is a winner who we promised, and Farhan agreed, who is with us. But we all get the privilege to spend a few minutes with you, Farhan, and I'm going to introduce who the others are. Over here, I'm going to start with Singh Rajput, the winner. Sunny, मैं English में introduce कर रही हूँ आपको. Sunny is from Sonbhadra in Uttar Pradesh and is the lucky winner of the survey on gender-based violence, which was conducted by the World Bank on Facebook, and we would not have been able to do the research we did, the research World Bank did, Farhan, but for you. And Victor will explain the significance of the partnership with you. Victor, I'll come to Victor then. Victor Hugo Orzoca Olvera is a senior economist at the World Bank, and is the IE program lead on entertainment education in development impact evaluation, what they call DIME, development impact evaluation, at the World Bank in DC. And Ariana Legovini is the head of the impact evaluation from the World Bank, again in DC, with us. And Sudeep Mazumdar, who represents the World Bank in India today, with us, is the lead external affairs advisor to the World Bank and has been with them for 10 years. I'm not forgetting anybody, right? And I have my colleagues, of course, Alok and Mandira, all part of the communication team. And briefly, let me just kick us off. I'm not going to give a big lecture, but you know about the evaluation that was conducted to study the effectiveness of a series of online entertainment education interventions in improving knowledge as well as changing attitudes and behavior related to gender-based violence and common gender practices among especially young people between the age group 15 to 30 in urban India. And Population Foundation's web series, Sex Ki Adalat, which is also part of Main Kuch Bhi Kar Sakti Hoon, dealt with issues of violence and discrimination and sex selection, pornography, menstruation, and used the entertainment education format. This was what was evaluated, and the World Bank offered incentives to the participants, and there is no way you can do online evaluation without participants, and it's very difficult. We have very high attrition rates in all the studies that we have done or others have done. So Victor came out with a brilliant idea, and over to Victor to explain to Farhan and everyone present here about the evaluation in a few minutes. Victor, may I invite you? Thanks, Poonam. Farhan, an honor to meet you. I have to say I'm a big fan of your work. So let me start by thanking you for your involvement in this study, which was crucial for reaching the critical mass of study participants to make this randomized controlled trial, which follows the same methods than a clinical trial for developing new medications, possible. And thank you, Sunny, along with other 5,000 individuals that were part of this social media research. Our study with PFI is part of the World Bank's research program on entertainment education, which brings together governments, researchers, and edutainment producers and distributors to test this very innovative communication approach and development with the goal to make behavior change campaigns more effective. And this work is much needed because research of traditional information-only campaigns show that they are not very effective in reaching the hearts and minds, and therefore in promoting behavior change. Our research with PFI, MTV, Discovery, et cetera, is showing that that human link of the narrative, of the inspiring role model,
can be very effective in changing perception of social norms and promoting behavior change. Now, through this randomized controlled trial, in India, we tested a very low dosage, less than 25 minutes of edutainment, co-produced by PFI. And we find that this was quite effective in improving youth awareness of violence against a woman in India, and in reshaping youth attitudes related to gender equality and attitudes condoning gender-based violence. The study also finds that individuals exposed to this programming were more likely to seek further gender information on the web and more likely to add a banner against GBV in their Facebook profile picture. Now, both of these online behaviors are very important for social coordination, which is needed to accelerate behavior change, social change at scale, right? Like the Me Too movement has shown. This work is also helping us scale up our partnerships with Facebook and other partners around COVID. And this study, which will be public, and its policy briefs will be shared with the Indian government, World Bank operations, and the broader development community supporting behavior change campaigns. So thank you again for your support. Over to you, Puna. Thank you, Victor. Farhan, Victor is a great friend of PFI, but he's one of the leading researchers on impact of behavior change. And I'm very much hoping, Farhan, as we plan our next partnership with Mard in You, that there'll be lessons from here that we can learn. And I'm also hoping that Victor will step in to partner with us on evaluating not just the numbers. We have big numbers with you there and given your convening role, but also we'll have an opportunity to impact the next lot of work that we very much hope to partner with Mard. I look forward to it. So with that, Farhan, this is the next 5 minutes are an opportunity for Sunny Singh Rajput to interact with you, hear from you, but we all get to hear from you too. So we're all going to be here waiting to hear you. And Sunny will get an award. Does he get an award? He gets an award, which is a smart cell phone. Does he get it on the screen here, or is it just being sent to him? Alok. I don't think the technology has arrived yet where we can pass it through the screen. So Farhan, I thought तुम कुछ भी कर सकते हो. It will reach. Okay, so since Farhan has announced technology hasn't arrived, Victor, you don't need to answer that question, but please know that he will get a smartphone for being the lucky winner. So, and you know, Farhan, he may have a couple of questions for you, but he only knows Hindi. He does not know English. So what we agreed was anything you say in Hindi, we will transfer, we will translate later, or anything he says in Hindi, we will translate later for Victor and the team from Washington. So we're not going to we're not going to take your time in the translation. We'll do it after the event. Thank you. Sure. नमस्ते सर. नमस्ते. सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हैं? जी सर, मैं भी बढ़िया हूँ सर. चलिए, अच्छी बात है. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. फिक्र मत कीजिए, आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं. आपके भी बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं फरहान, लंबे और काफी लंबे हो गए मेरे बाल. आपके भी बाल और भी अच्छे लग रहे हैं सर. थैंक यू. कुछ पूछना चाहते थे आप सनी? जी सर, ये मैं कह रहा था सर कि जैसे वुमेन प्रोटेक्शन के लिए जो है सब. सर आप सुन पा रहे सर? जी सर, वुमेन प्रोटेक्शन के लिए सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि अगर समाज में, पूरे देश में अगर
सबको, जैसे लड़कों को भी एक जैसा सम्मान और मान मिलता है, उस तरह लड़कियों को भी दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आपकी सोच बिल्कुल सही है। और मतलब और उम्मीद तो दूसरी हम चीज सभी सर, की जो यहाँ है वो ये, हाँ सॉरी, कहिए कहिए। और सर दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी बात है कि जैसे लड़कों को जो एजुकेशन करना होता है वो कराया जाता है सर, जो उनको फ्रीडम चाहिए वो चीज़ मिलती है सर उनको। और इसी प्रकार वुमेन्स को भी यही चीज़ एजुकेशन पूरी देनी चाहिए, फुल फ्रीडम देनी चाहिए, उनको सेल्फ डिफेंड होना चाहिए सर। बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए आप एजुकेशन उनका कराएं, उनका मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उनको एजुकेशन करने के लिए, जैसे अब पुअर फैमिली से हैं जो, उनको भी पूरी एजुकेशन के लिए उनकी भी व्यवस्था कराई जानी चाहिए, उनकी भी सुरक्षा देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। सर मेरे क्योंकि मेरे ख्याल से, लड़कों हाँ को जी, फुल, सर सर बोलिए बोलिए नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। सर, बोलिए सर। तो सर मैं, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि जिस प्रकार से हम लोग को, लड़कों को, वुमेन को जिस तरह की छूट मिलती है, जिस प्रकार की सबको, मतलब कभी कोई घर से पूछता नहीं है आप लड़के हैं तो आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, आप जो पढ़ना चाहते हो वो करते हैं। तो हमारे हिसाब से लड़कियों को भी वही करनी चाहिए। इस तरह से लड़कियां जितनी एजुकेटेड होंगी तो वो भी आसपास के लोगों को, मतलब वो भी अपना एजुकेटेड रहेंगी तो आसपास के लोगों को भी सुरक्षा करने के तरीके बताएंगी, जो नहीं पढ़ पाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे उनको भी सुरक्षा देने के तरीके, रहने सहने का सब चीज करेंगी, और कैसे किसी से मिलना है, किसी से डर कैसे निकालना है, वो एक एजुकेशन के थ्रू ही प्राप्त करेंगी वो लोग। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे एक बात पूछूं, एक सवाल पूछूं? जी सर। जी तो सर। ये जो अब आपकी सोच है जो मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत ही एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोच है। ये सोच आपकी कहाँ से है? जी सर। आपको किससे मिली ये सोच? सर वैसे मेरे को खुद से मिली है सर, और मैंने जैसे मैं देखता रहता हूँ तो मूवीज वगैरह, मतलब न्यूज़ वगैरह में मैं हर चीज़, और मैं हर जगह जाता हूँ, जैसे अ, दिल्ली गया हूँ, लखनऊ में खुद मैं रहता हूँ, शहर सोनभद्र में मेरा घर है, तो मतलब हर जगह मैं देखता हूँ। तो मेरे हिसाब से मैंने एक सोच लगाया तो सर उस तरह से देखा। अच्छा, तो आपके जो दोस्त हैं, जो मर्द हैं, वो जो दोस्त हैं वो भी आप ही की तरह हैं, आप ही की तरह सोचते हैं वो? जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है कि मतलब जो बदलाव हम चाहते हैं, जो मतलब यहाँ जो सब जी लोग सर। बैठे हैं, जो पूनम जी जो हैं, विक्टर जी जो हैं, बाकी सारे जो लोग हैं यहाँ, मतलब जी सर। इसी एक काम में जुटे हुए हैं कि मतलब किस तरह से एक समाज बनाया जाए, मतलब जहाँ बिल्कुल बराबरी हो, ऐसी कोई स्थिति ना हो जहाँ लड़कों को ज्यादा मतलब एक वो जो कहते हैं एक एडवांटेज मिले, वो एजुकेशन के मामले में हो, जैसे आप कहते हैं फ्रीडम के मामले में हो, अ, हक जी के सर। मामले में हो, सारी चीजों में। जी सर। जब आप जी सर। जो लफ्ज आप यूज करते हैं हम, तो हम को सिर्फ आदमियों के बारे में नहीं होना चाहिए। हम का मतलब सब, सभी इंसान। तो सब जब हम कहते हैं कि सब हमारे पास आजादी होनी चाहिए, तो उसमें मतलब ऐसा एक समाज होना चाहिए कि उसमें मतलब ये कहने की जरूरत ना पड़े कि हम और फिर औरत, हम और फिर लड़कियां, उसकी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। बराबरी का हक होना चाहिए सॉरी। सर, ही बराबर सेड का हक होना बराबरी चाहिए। का हक हम होना चाहिए। बिल्कुल 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 सही बात है। और इसमें मतलब एक एक तो है कि मतलब ग्राउंड लेवल पे जो बातें हैं, वो मतलब आप जो आपके करीबी जो लोग हैं, आपके निजी जो लोग हैं, अगर आप उन्हें समझा पाए, उन्हें मतलब ये राह दिखा पाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप एक इंसान को या दो इंसान को इस तरह सोचने पर के लिए अपना काम करेंगे, तो फिर वो दो इंसानों को या तीन इंसानों को करेंगे, और इसी तरह से एक समाज में धीरे धीरे बदलाव आता रहेगा। उसके अलावा मतलब जहां मेरा ख्याल है और जहां मेरी इंडस्ट्री का सवाल है, मेरी तो कोशिश हमें हमेशा ऐसी रही है कि हम मेरे वो फिल्मों के जरिए हो, कहानियों के जरिए हो,
या फिर ये जो ये प्रोग्राम जो हमने साथ में मिलकर किया है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उसके जरिए हो, कि मतलब जहां हम ज्यादा एक आवाम तक पहुंच सके, ऐसी मैसेजेस जो बहुत ही जरूरी है, खास तौर से हमारे देश में जो मतलब बहुत ही एक जवान देश है, जो पॉपुलेशन है हमारा बहुत ही मतलब बिलो 30 सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हमारा। तो किस तरह का देश हम चाहते हैं, अगर हम ये मतलब सिर्फ उन लोगों पे छोड़ देंगे मतलब जिनका मतलब एक जमाना गुजर चुका है, जिन लोगों का आने वाला है, उनके लिए हमें देश बनाना पड़ेगा। तो इन प्रोग्रामों के जरिए, हमारे फिल्मों के जरिए हमारी कोशिश तो हमेशा मतलब जारी रहती है कि हम ऐसे पॉजिटिव मैसेजेस डालें, ऐसी बातें करें जिससे मतलब वो औरतों को एम्पावरमेंट मिले और मर्दों को एक इंस्पिरेशन मिले या एक थोड़ा मोटिवेशन मिले कि वो थोड़ा मतलब एक अलग सोच अपनाएं, दूसरे रास्ते पर चले जहां पर जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल एक बराबरी का माहौल होना चाहिए। और कुछ पूछना चाहेंगे सनी जी? बस हम सोच के यही सब होने कि को भी हम नहीं लगाना, हम बराबर सबको देखना चाहिए कि हम खुद आजादी हमारे देश की दुनिया है, आपकी आवाज ठीक से नहीं तो आ रही। हम That's a challenge. So, if he comes back, he comes back. We'd love to hear what he says. Otherwise, we'll be in touch with him and make sure that we get the message he was trying to give. I'm sorry that his connectivity is not as great as, well, that's India for us. But he's very lucky while the rest of the country is unfortunately dealing with the difficult COVID situation. He gets to meet you, Farhan, and so do the rest of us. So thank you very much. But I'd like to invite Sudeep Majumdar to wrap it up for us and thank Farhan. And Sudeep, over to you. Thank you, Poonam. It was really heartening to see so many male voices on this issue because, one goes to so many events where they're largely, these voices of women come to the fore, and I wonder why the male voices are where they are hiding. So with Farhan leading this charge, providing his voice, and great that Sunny is here to provide that further strength to this voice. It's very heartening to see this happening. I just wanted to also thank the research team, Dante, Nandan, Victor, Absolutely. the banks, the SAR General Lab, which financed the study, and the great collaboration between DIME and the India Country Office of the World Bank, which made this feasible. As you know, in 2018, this started from a workshop, which the government of India also highlighted the importance of this, focus to be taken on by the bank and by Poonam and your team. So thank you, everyone. And Sunny ji, आपको बहुत-बहुत मुबारक. आपने जो बोला वो बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा. आपके दोस्तों को भी आई होप ये बात पहुंच रही है. और इस एंगेजमेंट में थोड़ा कनेक्शन का इशू था, पर ये जो वीडियोस जो आपको पहुंच रहे हैं उसमें कोई कनेक्शन का इशू ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप देखते रहिए और लोगों को ये बात बताते रहिए. थैंक यू. Great, thanks everybody. And I would also, may I also just quickly also, I would also quickly like to thank all the research team and all the data collectors. It's Poonam, it's one thing because we come in and we do things without, really truly being able to understand what the impact of it is going to be. You're just doing it, because it resonates with you as a cause, and it resonates with you emotionally, to want to do something. But it's very heartening when you get that kind of feedback, when you know how many people have seen a message or how many people have engaged with a call out.
and it's very, very motivating when you have those kind of numbers to be able to understand that what you're doing is actually making a difference somewhere. It's not just shouting into space and there's no echo coming back at you. So I really want to thank the team, because that really does motivate me and many people like me. I can speak for many people like me. When we get this information, it really does help. Great. So we hope to continue. Your and words let's motivate get us a lot. Oh, Victor. Go ahead. Victor. Sorry, Victor. No, I'm just saying that words like Farhan's motivate us a lot, the researchers. And just very quick background, my department, the Development Impact Evaluation, DIME, has over 200 such impact evaluations in over 60 countries, all very innovative interventions with a goal to change development investments at scale. So this type of unusual partnerships of researchers, policymakers, and edutainment producers is what is needed to bring behavior change at scale. So thank you so much for your kind words. Oh, thank you. Great. So with that, we close, and we will share with you, Farhan, the details of how this study changed behaviors. And we also very much hope, as I said, that some of the films that we produced, which we've just shared with Victor recently, the films that Mard and PFI did for Bas Bahut Ho Gaya, we are hoping that we are hoping that Victor will consider doing an evaluation of some of those films. They continue. The Vidya Balan film that you made has reached more than 12 million, and it'll be great to get the impact. So we're working on that. Wonderful. I look forward to. Lovely. Thank you, everybody. Good night. Thank you. Bye-bye. Bye, everyone. Thank you.